सो हेलो गाइस। काफ़ी दिनों से फिर मैं बिज़ी था और मैं एक्टिव में नहीं था, डिस्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। सो या आई एम बैक। सो टुडेज टॉपिक इज आर्ग्यू फॉर योर लिमिटेशंस एंड दे आर योर्स। सो ओके, we are starting now. Many people spend a great deal of energy arguing for their own limitations. I can't do that. I can't help it. मैं ये नहीं कर सकता. I can't help it. I have always been that way. मैं हमेशा से ऐसे ही था. और जैसे मैं इनकन्सिस्टेंट हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि I have been that all the I have always been that way. I'll never having a loving relationship. मेरे पास कभी लविंग रिलेशनशिप था ही नहीं और ना फ्यूचर में हो पाएगा. And thousands of other negative and self-defeating statements. Thousands of negative and self-defeating statements. Our minds are powerful instructions. When we decide that something is true or beyond our reach, it's very difficult to pierce through this self-created hurdle. Our minds are powerful instrument. हमारा जो माइंड है वो एक शक्तिशाली शस्त्र है. इंस्ट्रूमेंट को पता नहीं, यंत्र बोल सकते हैं मे बी. तो हमारा जो दिमाग है वो एक बहुत शक्तिशाली यंत्र है. व्हेन वी डिसाइड डैट, जब हम डिसाइड करते हैं कि समथिंग इज़ ट्रू और बियॉन्ड आवर रीच. समथिंग इज़ ट्रू और बियॉन्ड आवर रीच समथिंग इज़ ये सही है और ये हमारी पहुँच से बाहर है. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पियर्स थ्रू दिस सेल्फ क्रिएटेड हर्डल. ये हमने डिसाइड किया ये कि हमारी पहुँच से बाहर है. तो वहाँ पर जब हम ये बना लेते हैं कि ये हमारी पहुँच से बाहर है तो ये हमने अपनी बाउंड्री बना ली कि हम इतना ही कर सकते हैं. तो ये बहुत ही हार्ड होता है कि अपने हर्डल को हम लोग पियर्स करें. पियर्स भेदें, अपने इस सील्ड को हम लोग तोड़ के आगे बढ़ें. सो when we create our limitations, so we are bound to, maybe our mind bound to live in their limitation. There is no limitation. When someone can reach it, you can reach it. Okay, when we argue for our position, it's nearly impossible. जब हम अपने लिए आर्ग्यू करते हैं, अपने से और आर्ग्यू करते हैं, सेल्फ क्वेश्चनिंग इज ठीक, ओके, सेल्फ रियलाइजेशन इज ओके, बट सेल्फ आर्ग्यू कर सकते हैं. लेकिन जब हम अपने को ही नीचे दिखाने के लिए सब बोलते हैं कि हम ये सब नहीं कर पाएंगे, तो वो ही एक वहीं से चीज़ इम्पॉसिबल हो जाती है. सपोज फॉर एग्जाम्पल, यू टेल योर सेल्फ आई कांट राइट. सोचो कि तुमने अपने आप से बोला कि तुम नहीं लिख पा रहे हो. सपोज यू टेल योर सेल्फ यू कांट राइट. यू लुक फॉर एग्जाम्पल्स टू प्रूव योर पोजिशन. यू विल रिमेंबर योर पुअर एसेज इन हाई स्कूल. तुमने बोला कि हम अच्छा नहीं लिख पाएंगे, तो तुमने अपने पुराने ऐसे दिखा दिए कि भाई हमने स्कूल में लिखा था, हमको नंबर नहीं मिले. और तुमने काफ़ी चीज़ें दिखा दी, भैया मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है. काफ़ी तुम एग्जाम्पल फर्जी दिखा रहे हो. यू विल रिमेंबर योर पुअर एसेज इन हाई स्कूल. तुम्हें अपने हाई स्कूल के गंदे लिखे हुए ऐसे की याद आएगी. और रिकॉल हाउ ऑकवर्ड यू फेल्ट द लास्ट टाइम यू सैट डाउन टू राइट अ लेटर. और तुम्हें कितना अजीब लगा था कि लास्ट टाइम जब तुम बैठे थे लेटर लिखने के लिए. यू विल फाइंड योर हेड विथ लिमिटेशन दैट विल फ्राइटन यू फ्रॉम ट्राइंग. तुम अपने दिमाग से जो लिमिटेशंस
बना रखी है तुम्हारी, तुम उससे डर जाओगे और वो तुम्हें ट्राई करने से रोकेगी. In order to become a writer or anything else, the first step is to silence your greatest critic, you. In order to become a writer or anything else, मतलब कुछ बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने सबसे बड़े विरोधी को शांत करना पड़ेगा, और सब आपका सबसे बड़ा विरोधी आप ही हो. I like that because I experienced it. I had a client who told me I'll never have a good relationship. मेरे पास एक क्लाइंट था, मतलब राइटर बोल रहे हैं. आई हैव अ क्लाइंट, हैव नो पास्ट ना, तो आई हैड अ क्लाइंट हु टोल्ड मी that I will heal never have a loving relationship or good relationship. I I always screw them up. मैंने हमेशा उसको ख़राब कर दिया है. Sure enough, she was right. हो सकता है मतलब काफ़ी हद तक वो सही रहे. Whenever she met someone, जब वो किसी से मिलती है, जब कभी भी वो किसी से मिलती है, whenever she met someone, she would, without even knowing it, look for a reason for her partner to leave her. Without even knowing it, look for a reason for her new partner to leave her. जब वो किसी से मिलती है तो उसके मन में ये पहले से आता है कि हमको छोड़ देगा, और कि कोई भी रीज़न मिलेगा ये मुझे छोड़ देगा. If she were late for a date, she would tell him, I am always late. अब वो लेट, अब मतलब वो उसके साथ डेट पे गई और पहली डेट में लेट हो गई, तो फिर वो कहेगी आई एम ऑलवेज लेट. मतलब इस वजह से वो, अब जैसे तुम लेट हुए हो, ठीक है ना यार, दूसरों को कहने दो, तुम खुद से क्यों कह रहे हो. ये मतलब हो सकता है राइटर ने ये बोलना चाहो. सो इफ़ दे हैड एन disagreement, she would say, I am always getting into arguments. Sooner or later, she would convince him that she wasn't worthy of his love. Then she would say to herself, see, it happens every time. I'll never have a good relationship. पहले तो आप खुद ही अपने मतलब हर जगह अपने आप को वो बोल रहे हो कि भाई मैं हमेशा लेट करती हूँ, हर जगह पर लेट जाती हूँ, और मैं हमेशा आर्ग्यूमेंट्स में घुस जाती हूँ. चलो भाई मेरी ही बात हो रही है इसे लग रहा. तो शी हैड टू लर्न टू स्टॉप एक्सपेक्ट थिंग्स टू गो रॉन्ग. शी हैड टू लर्न टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू गो रॉन्ग. शी हैड टू लर्न टू स्टॉप एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू गो रॉन्ग. शी नीडेड टू कैच हरसेल्फ इन एक्ट ऑफ आर्गुइंग फॉर हर ओन लिमिटेशंस. अब वो जो उसके लिमिटेशंस हैं वो मतलब अपने लिमिटेशन से आर्ग्यू करना बंद करे कि भाई मैं परफेक्ट, मतलब तो यहाँ पर उसकी आर्ग्यूमेंट क्या है. उसकी आर्ग्यूमेंट शायद यही है कि मैं वो उसके पास गुड रिलेशनशिप नहीं बनी रह पाती, उसकी ये आर्ग्यूमेंट है. लेकिन वो स्पॉइल खुद ही करती है अपनी चीज़ों को. मे भी ये हो सकता है राइटर के अकॉर्डिंग. When she started to say, I always do that, she needed instead to say, that's ridiculous, I don't always do anything. She had to see that argument for her limitations was just a negative habit that could easily be replaced with a more positive habit. जो अपने आप को हम लोग बुरा बोलते हैं वो एक नेगेटिव हैबिट है, वो रिप्लेस हो सकती है अच्छी हैबिट से कि अपने बारे में हम लोग अच्छा बोले कि हम वो कर सकते हैं ये. टुडे शी इज़ डूइंग मच बेटर, आज वो अच्छा कर रही है. व्हेन शी रिवर्ट्स टू हर ओल्ड हैबिट शी यूजुअली लाफ एट हर सेल्फ. जब वो अपनी पुरानी आदतें मतलब पुरानी आदतों के बारे में सोचती है तो वो हंसती है कि भाई क्या मैं था, मैं क्या हूँ. I have learned that what I argue for my own limitations very seldom do I disappoint myself. जो हम अपनी लिमिटेशंस के बारे में बताते हैं हम अपने आप को डिसअपॉइंट कर रहे होते हैं. समझ रहे हो. एक जो देख रहा होता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, और एक जो होता है देखने वाला करने वाला है उसको तुम डिसअपॉइंट कर रहे होते हो अपनी लिमिटेशन बता के, और एक जो लिमिटेशन बता रहा होता है. चलो 3-4 टाइप के लोग तुम्हारे अंदर है, सभी के अंदर रहते हैं. आई सस्पेक्ट द सेम इज़ ट्रू फॉर यू. मैं देख पा रहा हूँ
The same problem is same for you. Remember that everything has God's fingerprint on it. Remember that has remember that everything has God's fingerprint on it. Rabbi Harold Kushner reminds us that everything that God has created is potentially holy. Our task as humans is to find that holiness in what appears to be unholy situations. हमारा पार्ट मतलब ह्यूमंस का पार्ट इतना ही है कि हम लोग अनहोली पार्ट में भी होलीनेस ढूंढें भाई साहब. He suggests that we can learn to do this. We will have learned to nurture our souls. It's easy. Maybe what the meaning of nurture I don't know. I'll add it to my vocab. Nurture नर्चर तो भाई जितना आपको लग रहा है कि मारना जो भी पता नहीं. So I will add it. It's easy to see God's beauty in the beautiful sunrise, in a beautiful sunrise, a snow-capped mountain, the smile of a healthy child, or in ocean waves crashing on a Sunday beach. But we can learn to find the holiness in seemingly ugly circumstances, difficult life lessons, a family tragedy, or a struggle for life. हाँ, अच्छे में खूबसूरती ढूंढना बहुत मतलब अच्छी चीज़ों में हम लोग खूबसूरती आसानी से ढूंढ सकते हैं, लेकिन जहाँ पर हम लोग को मतलब हार्ड होता है ढूंढना, या तो लाइफ ट्रेजिडी हो, फैमिली ट्रेजिडी हो गई, या लाइफ में काफ़ी दिक्कतें हैं, उनमें भी हम लोग को होलीनेस ढूंढना है. समझ रहे हो, हर चीज़ में भगवान के फिंगरप्रिंट है. जो भगवान करता है अच्छे के लिए करता है. तो आवर पार्ट एज अ ह्यूमन इज टू फाइंड द होलीनेस in the in what appears to be unholy situation. When our life is filled with the desire to see the holiness in everything, everyday things, something magical begins to happen. A feeling of peace emerges. We begin to see nurturing aspect of daily living that we previously hidden to us. When we remember that everything has God's fingerprint on it, that alone makes it special. If we remember that spiritual fact while we are dealing with the difficult person or struggling to pay our bills, it broadens our perspective. It helps us to remember that God also created the person you are dealing with, or that despite your struggle to pay your bills, you are truly blessed to have all that you do. Somewhere in the back of your mind, try to remember that everything has God's fingerprint on it. The fact that we can't see the beauty in something doesn't suggest that the fact that we can't see the beauty in something doesn't suggest that it's not there. जो फैक्ट है कि हम किसी में खूबसूरती नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें खूबसूरती नहीं है. रेदर इट सजेस्ट दैट वी आर नॉट लुकिंग केयरफुली इनफ. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम अच्छे से नहीं देख रहे हैं, और विथ अ ब्रॉड एनफ पर्सपेक्टिव टू सी इट. भाई साहब, ये वाली लाइन दोबारा पढ़ते हैं. द फैक्ट दैट we can't see the beauty in something doesn't suggest that the fact that we can't see the beauty in something doesn't suggest that it's not there. Rather, it suggests that we are not looking carefully enough or with a broad enough perspective to see it. Okay.
Okay, so resist the urge to criticize. Resist the urge to criticize. When we judge or criticize other person, it says nothing about that person. It merely says something about our own need to be critical. If you attend a gathering and listen to all the criticism that is typically levied against other, and then go home and consider how much good all the criticism actually does to make our world a better place, you will probably come up with the same answer that I do. Zero. It does not good. It does no good. मतलब ये कुछ भी अच्छा नहीं करता. But that's not all. लेकिन ये सब कुछ नहीं है. Being critical not only solves nothing, it contributes to the anger and distrust in our world. After all, none of us likes to be criticized. Our reaction to criticism is usually to become defensive or withdrawn, and person who feels attacked is likely to do one of two things. He'll either retreat in the fear or shame, or he will attack or lash out in anger. How many times have you criticized someone and had them respond by saying thank you so much for pointing out my flaws? I really appreciate it. Criticism, like swearing, is actually nothing more than the bad habit. It's something we get used to doing. We are familiar with how it feels. It keeps us busy and gives us something to talk about. If, however, you take a moment to observe how you actually feel immediately after you criticize someone, you'll feel notice you'll notice that you'll feel a little deflated or and ashamed, almost like you are the one who has been attacked. The reason this is true is that when we criticize, it's a statement to the world and to ourselves. I have a need to be critical. This isn't something we usually proud of to admit. The solution is to catch yourself in the act of being critical. Notice how often you do it and how bad it makes you feel. What I like to do is turn it into a game. I still catch myself being critical, but as my need to criticize arises, I try to remember to say myself, "There I go again. There I criticize someone again." Hopefully, more often than not, I can turn my criticism into tolerance and respect. So, like for today, we read three topics. Argue for your limitations and they are yours. Like अपनी लिमिटेशन से आर्ग्यू करो, आर्ग्यू विथ योर लिमिटेशंस दैट the topic refers to argue for your limitations and that's yours. Like you don't have any limitations, you set limitations for yourself. Okay, so you can achieve anything. Maybe uh, according to the writer, you can set boundaries according to you. You set your limitations according to you, and it's only according to you. It's not in a good way if it bounds you. Okay, and remember that everything has God's fingerprint on it. Whatever happen is whatever whatever happened happen. See the good thing in it. Why God did this to me. God is our parent, and He do good things in our life. He wants good things from us. So yeah, as a human, we have a job to see hope, to see beauty, to see like holiness where it is hard to see. Okay, where it is easy, like when we are watching a sunset or sunrise,
The beauty is in front of us. It's easy to see. But when we are like, when we saw a dead old lady which is suffering from the pain for past 2 years, we say, oh my god, this is very sad. But for the farther perspective, like for the bigger perspective, the lady was suffering from the pain for past 2 years, and the death has relieved her from that pain. I don't know what happened after the, like what happened after that with her, but the death relieved her from the pain. It is good to live in another world without like our loved ones. For me, according to me, I saw her like alone, but without the pain. Maybe there is like heaviness in her heart, but that's okay. The pain, she was suffering from the pain. I don't know how much, because she can't tell me. Like, she can't tell me because she was very old and she cannot talk to anyone. Yeah, and resist the urge to criticize. We don't have to criticize someone or anyone just because our perspective is not like matching. That doesn't mean they are wrong or right, or we are wrong, they are right. That's their opinion, and like they have all the rights to think about it anyway, like anything from. You take it. That's like, when you have the right to think anything, then they have right to, and they are not wrong for doing it. You are wrong for judging them. Okay, everyone has the right to do anything. Okay, thank you.